But most of the states, including the BJP states, decides that GST period, the extension of GST regime should be extended for some time. Let it be considered. Second thing, sir, some of the states. आप ज्ञान मत दो उनको. No, some of the states are including Tamil Nadu fields. You are releasing the fund. We are having no problem. But when releasing the fund, you are expecting the AG's audit report to release the fund. There are some disputes between the AG office and the state or center. Because of the delay, the financial stress of the state government is not adequately addressed. So in anticipation of AG report, if it is possible, let it be released. Thereafter, we can reconcile the AG report with the figure. This is my suggestion, sir. Second, come to the answer given by the finance minister. So far as Tamil Nadu is concerned. नहीं माननीय मंत्री जी यही प्रश्न आ गया ना आपका. फिर प्रश्न क्या है? Sir, I am coming to question. I am coming. Sir, the question I have. आपको सुझाव देने के लिए किसने कहा था प्रश्नकाल में? प्रश्नकाल में प्रश्न पूछो आप. Sir, my specific question to quote. Yes. Sir. चलिए. The answer I have gone through the answers submitted to the House by the Honorable Finance Minister. It's by perusal, it says that there is no pending as far as the GST compensation is concerned till 2022-23 February. But I got the figure from the state government otherwise. 2021, the compensation due is 22,322 crore. Compensation received 18,000 crore. Balance 4,222 crore is pending, even after the audit completed and pending before the Government of India. If it is so, this type of confusions, when on transit, will give the adverse effect to the state government financial stress. So please consider, according to me, not only GST, according to 15th Finance Commission and civil supplies, altogether, more than 15,000 crore is still due. What are the steps going to do, not only for Tamil Nadu, such a complexity must be resolved. What are the mechanisms we are having? That is my question. Sir, if the suggestion is for expediting the payments, well taken, I'll take it on board. But the question itself is so worded that it's not relating to the compensation cess under the GST. It talks about the capital expenditure funds that we are releasing for the states. So it seems to cover two different matters, all relating to finance, no doubt. But therefore, my answer will have to be one for the GST compensation, one for the capital, the tax devolution. So this one question has so many different aspects. And just as in conclusion, the Honourable Member says, release in every case, whether it's compensation, whether it is capital expenditure, whether it is devolution under the Finance Commission recommendation, no delays be accommodated, release it fast. Well, very well taken, sir. But if I'm expected to give under each category, I'll take 1 minute to say, GST compensation, it is not the central government which decides up to when the compensation has to be given. It is by the very GST law that the council decides. And the law says that you are not going to be able to give it after 5 years. And it was decided in the council, where all members, finance ministers from all states sit together in the council to take a call. It was decided there for the back-to-back loan that has been taken during the COVID period, and because for which we need to service it and also to repay the loan, the cess be extended till 26-27. So till 26, if we have got to be collecting the cess, it is purely for sake of paying the loans taken and servicing the loans taken for the 5-year period when cess has to be for the compensation purpose. So the extension of it beyond 22 June is simply restricted to the payment of loan which has been taken for servicing the compensation and also for the loan itself and for the interest. So there's nothing contemplated beyond it, and that's a decision of the council, not of the central government. Now, secondly, AG's certification is by law between the centre and state an agreed process, where unless that authentication from the AG is given, and if there is any delay in that process between the state and the AG,
Of course, it goes without saying that it is between the state and the AG that the matter has to be sorted out. If between them there is a problem and therefore the AG certificate gets delayed in reaching the central government, I would put it matter of fact that the delay is not at my end. And therefore, I would like to clearly state on the GST compensation as regards Tamil Nadu, AG's certification has been received for 17, 18 and amounts have been released. There are only some disputed amount as the Honourable Member himself was saying, but AG's certified figures were received for 2020-21 for an amount of 4,223, which has to be now processed and sent. So it is in the process, it will be getting cleared. But otherwise, overall, for all the states, up to May 2022, for which the payment goes in early June, every amount has been cleared which was available in the public funds. And the total amount which was given was 86,912 crores that was released on 31st May 2022. So I'll humbly submit to the House through you, sir, and to the Honourable Member that in the process of getting the AG certificate, state governments, not just Tamil Nadu, state governments will have to be a lot more, pardon me for using the word, efficient. You will have to get that thing sorted out at the earliest so we can release it at the earliest. But without the AG certificate, beyond the point, it's very difficult for me to go to pay. Sri N.K. Premchandan. Thank you very much, sir. Sir, this is a very important question as far as the states are concerned. And Madam, I would like to clear the picture because almost all the states, especially my state of Kerala, is also blaming the union government that the union government is not properly disbursing the GST compensation, the revenue deficit grant, and that is the reason by which the government of Kerala is forced to impose a cess of ₹2 per litre of diesel and petrol. And such a big controversy is also going on. I think that it is the right forum by which the cloud of suspicion could be cleared. Madam Speaker, sir, I would like to know through you that the integrated GST is settled from the IGST pool as per the request from the state government. Media as well as the controversy, it is being divulged that the expenditure committee in Kerala has in its report found out that the Kerala has IGST shortfall amounting to ₹5,000 crore per year. I would like to know from the Honourable Finance Minister through you, sir, how much has Kerala claimed as IGST in the past 5 years and how much has been disbursed by the sender? Also, I would like to know the revenue deficit grants for the last 5 years which were granted to the state of Kerala. These are the specific questions. Thank you very much, sir, for giving me this time. Sir, it's very difficult to communicate this because it's difficult to also understand. In the sense, how exactly can this happen? And after which the state goes about saying, we are not getting money in time. Suppose the GST introduction, I am looking at my records and saying, Kerala has not sent AG-approved certified statements for GST compensation for the year 2017-18, for the year 18-19, for the year 19-20, for the year 2021, for the year 21-22. I'm sorry to be so, going by year and year and year, taking the House's valuable time. So not for 1 year have you sent me the AG's certified accounts for getting your compensation dues. And then it is accused that the centre is not releasing the funds in time. Not 1 year certified authorized statement has reached, sir. I would honestly, very humbly request N.K. Premchandranji, who is a very senior member of the House, please go sit with the state government and request them to send it all together even at one go
Sir, before you, I would suggest that within a reasonable time, on the receipt of that, we'll clear it. You've not sent for 1 year, and you keep blaming us that you're not giving us the money in time. On the contrary, in the devolution matter, tax devolution as per the Finance Commission recommendation, even this month, 2 installments in the place of 1 has gone to every state. So Kerala benefits from that as well. So, Premachandranji, through you I request, sir, he should expedite this from 5 years. Question number 144, Shri K. Subharaman, माननीय मंत्री महोदय, पटल पे श्री मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार में या इनके मंत्रालय में और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में विरोधाभास है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च सार्वजनिक तौर पर यह कह रही है निरंतर और लगातार कि हम इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, उसकी 12-13 वॉल्यूम्स छपेंगी, पहली वॉल्यूम मार्च 2023 में आएगी, 100 से ज्यादा इतिहासकार उसमें शामिल हैं उस प्रोजेक्ट में। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दे आर 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स। वन इज अपडेशन ऑफ हिस्ट्री, which is a respectable, kosher concept recognized the world over. The other is rewriting history, which is a very pernicious and a portentous concept because it is the process of rediscovery of the current narrative by pinning it on certain historical moorings. And anybody who has tried to rewrite history from Bismarck onwards till Ziaul Haq has failed. So my question to the Honorable Minister is, if the Indian Council of Historical Research is not rewriting history, then what precisely are they doing? Would the Minister enlighten this House exactly why there's a contradiction between what you are telling this House and what the Indian Council of Historical Research is publicly saying? अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता श्री सुब्बारायन जी ने पूछा है क्या ICHR इतिहास की पुनर्लिखन कर रहे हैं क्या? लिखने की परियोजना शुरू की है क्या? हाँ, पुनर्लिखन परियोजना शुरू करें। उत्तर हमने बड़ा विनम्रता से दिया है, ऐसा कोई योजना रीराइट करने की नहीं है, जिसके बारे में अच्छे अंग्रेजी शब्द में आदरणीय मनीष तिवारी जी ने थोड़ा उसको और लचीला बनाया है। सरकार के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है किसी इतिहास को पुनर्लिखन करने के लिए। लेकिन आपने सही कहा है, क्योंकि प्रश्नकर्ता आपके आदेश से तो जो प्रश्न उसी का उत्तर दिया जाता है। उन्होंने कहा क्या ICHR इतिहास के बारे में कोई प्रकल्प लिया है क्या? मैं इस सदन को आपके माध्यम से बड़ा विनम्रता से अवगत कराना चाहूंगा। जी हाँ, क्योंकि भारत में इतिहास की मैं अगर आपके सामने अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण भी चाहिए, 2-3 उदाहरण बताऊंगा। अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके गृह राज्य और गुजरात की सीमा में मानगढ़ गए थे, मानगढ़ धाम गए थे, जहां 1913, बहुत पुरानी नहीं, 1913 में एक ऐतिहासिक चीज हुई थी। देश की आजादी के लिए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में 1,500 लोगों की शहादत हुई थी। इन्हीं दिनों में हमारी सरकार ने 2 बहुत बड़े क्रांतिकारियों को की सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया। साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 7 साल और 9 साल की आयु में इनकी शहादत हुई थी। संस्कृति मंत्री दक्षिण से आते हैं, आंध्र से आते हैं, तेलुगु भाषा भाषी है। क्या यह देश आलूरी सीताराम राजू जैसे एक आदिवासी समाज की जननेता के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है? क्या माननीय अध्यक्ष जी, बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र जिन्होंने
1817 में उड़ीसा में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। उधर की लोग महामहिम आज नहीं रहे, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी उसकी 200 उद्घाटन के अवसर पर कहे यही सही देश की आजादी का पहला ही लड़ाई है। यह सारा विषय आज के इतिहास के हिस्सा अध्यक्ष जी नहीं है। केवल इतना ही नहीं, देश की गुलामी कब से हुई आखिर? पिछले 1100-1200 साल से इस देश विभिन्न कालखंड में पराधीनता की ओर गुजरा है। उस समय पे देश को अगर हम समीक्षा करते हैं, दक्षिण हो या उत्तर हो या पूरब हो या पश्चिम हो, ऐसे अनेक साम्राज्य है जिन्होंने देश की संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता को उजागर करने के लिए अनेक काम किया। ये आज इतिहास की पन्ने में आने चाहिए। ICHR ऐसे फीलिंग ज्ञाप करता है। हम कोई पुनर्लिखन नहीं कर रहे हैं, इतिहास को व्यापक कर रहे हैं, बड़ा सरल रेखाएं खींच रहे हैं। इतना ही हम काम कर रहे हैं, ICHR इतना ही काम कर रहा है। श्री सतपाल सिंह। अध्यक्ष महोदय, आप पूछिए, बाकी कोई डिबेट में नहीं जा रहा, केवल आपका जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज, आप भी अध्यक्ष महोदय, प्लीज बेटे बेटे मत बोलिए माननीय सदस्य, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपका समय देने के लिए आपका आभार। मैंने मौका दे दिया ना, मंत्री जी ने जवाब दिया, फिर बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते आप? ओनली प्लीज सतपाल जी। नो सतपाल जी। मैं माननीय मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछने से पहले इस बहुत ही सम्मानीय सदन के सामने दो बातें रखना चाहता हूं। नंबर 1, प्रश्न पूछो। मैं प्रश्न नहीं रख रहा हूं अध्यक्ष जी। एक तो ये निर्विवाद सत्य है कि अंग्रेजों ने इस देश पर राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, उसकी नीति का जो है वर्णन किया। नंबर 2, उसी के तहत उसने आर्य, द्रविड़, आदिवासियों को बांटा। उसके साथ साथ हमारे देश के जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जिनको फादर माना जाता है, डॉक्टर रामजी सिंह ने ये कहा कि डीएनए की रिसर्च के आधार पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक आदिवासी सब का डीएनए एक है। और इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से हमारे कॉलेज और इतिहास पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आए, हम लोग विदेशी हैं, ये आर्य है, इसलिए जो है पुनर्लेखन की बहुत जरूरत है। और मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, इस देश को सत्य इतिहास लिखने के लिए। और 15 अगस्त 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दास्ता के सारे चिन्ह खत्म करना है। दास्ता के चिन्ह खत्म करने के लिए पुनर्लेखन की क्या जरूरत नहीं है, क्या करना चाहिए? अध्यक्ष जी, इसके लिए देखिए, ये सभ्यता के अंदर कई प्रकार के मत है, कई प्रकार के विचार हैं। ये इतिहास से संपर्कित ज्यादा नहीं है। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं, भारत सरकार की ये विषय आज की सरकार की बहुत स्पष्ट रूप में मानना है। भारत बहुधा संस्कृति की देश है। अभी मैं अगर एक ही उदाहरण दूं, हम कैसे देश को मानते हैं। अभी पिछले 2 महीना पहले काशी में भारत सरकार की ओर से काशी तमिल संगमम आयोजित करके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। यह हमारे विचार है। सभी भाषा, सभी संस्कृति, सभी उपासना पद्धति को, विचार को सम्मान देने वाला संस्कृति भारत, इसको सरकार मानती है। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 श्रीमती संगीता आजाद। ये बड़ा डिबेट का विषय, आप इसलिए सर मैं 2-3 क्वेश्चन एक ही में पूछ लूंगी सर। मैं दो तीन छोटे क्वेश्चन बस पूछ लूंगी। ये आपको डिस्टरबेंस कर रहे हैं जानबूझकर, आपके सदस्य आपको ही। सर समझ ले क्या योजना है इनकी। छोटे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सर।
माननीय सदस्य, आप आपके दल के माननीय सदस्य को डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर सर आगे चलाऊं मैं? नहीं सर, मेरा पूछ लीजिए सर। आप आपके सदस्य को क्या समझाइए। कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सीपीई को नियमित करने, सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कार्य करने हेतु अलग अलग जिलों को निर्धारित किया गया है? विवाद है क्या कोई? हाँ, क्यों महिला सदस्य को रोकना चाहते हैं? क्षेत्र में कार्य करने आपके दल के महिला सदस्य क्यों रोकना चाहते हैं? गलत तरीका है आपका। नो, मेरे संसदीय में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कराए गए सभी कार्यों को विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें। और साथ ही साथ में माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा आग्रह करना चाहती हूँ कि जो भी पीएसयू किसी भी संसदीय क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ के सांसदों का प्रस्ताव को भी उसको सम्मानित किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। माननीय मंत्री जी। महिला विरोधी है, पार्टी विरोधी। स्पीकर साहब, कंपनीज का एक्ट का 135वां जो सेक्शन है, उसके दायरे के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उनको अपने मुनाफे में से 2% पैसा खर्च करना होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। उसके अंदर यह भी प्रावधान है कि जिस जगह के ऊपर वो कंपनी है, प्राथमिकता उस क्षेत्र को दी जानी चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। आमूमन कंपनियां जिस क्षेत्र की होती हैं उसी जगह के ऊपर, उसी प्रांत के ऊपर अपना ज्यादातर पैसा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब देखा जाए, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे न केवल एक क्षेत्र को ही आगे प्रोत्साहित किया जा सकता है, बल्कि सारे देश के अंदर इसका फैलाव अगर हो तो सारा देश इकल्ले तौर के ऊपर उन्नति कर सकता है। बहरहाल मैं माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूं कि ये प्रावधान ऑलरेडी है, और अगर वहां पर आप वहां के जो बोर्ड के जो सदस्य हैं उनसे अगर आप संपर्क करेंगी और कहेंगी कि हम एमपी के तौर के ऊपर सुझाव देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि बोर्ड वालों को कोई आपत्ति इस विषय में नहीं होगी कि इनको सुझाव को ना माने। सर हम लोग जब भी ये सीएसआर के लिए प्रोजेक्ट या देते हैं वहाँ पे सर वो लोग कहते हैं कि आप मंत्रालय द्वारा उसको स्वीकृति करा के लेके आइए। तो क्या मंत्री जी ये आश्वस्त करेंगे कि आप लोगों के जो भी प्रोजेक्ट हम लोग सीएसआर के थ्रू देते हैं, कम से कम आपके लोगों की तरफ से ही कुछ आश्वासन या वो चला जाए? सर, मंत्रालय कोई आदेश नहीं देती। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये सारा कंपनी के बोर्ड का अधिकार है, वही फैसला करती है, बोर्ड ही फैसला करता है और उसको मॉनिटर करता है और उसको खर्च करने के उपरांत हमारे MCA 21 की रजिस्ट्री के अंदर उसको अपलोड कर देता है। और ये सारा का सारा खर्चा अगर कोई जानना चाहे तो www.governmentcsr.in के ऊपर देख सकता है। डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, Mr. Speaker. I'm afraid the Minister's answer submitted to the House is somewhat incomplete, because pursuant to the company's corporate social responsibility policy, they amended the rules in 2021. A company that fails to spend the required 2% of average net profits over the previous 3 fiscal years must transfer the unspent amount on ongoing projects defined in the rules to a special unspent CSR account for their use within the next 3 years. And in fact, what's interesting about this is, sir, that I've raised this once before a few sessions ago in this House. The government has never submitted to Parliament any indication, not even in this answer, sir, of whether there have been unspent balances. This is about PSUs, but the same question applies to other companies. Have there been unspent balances? Have they been given? What is the rationale for the change that you have just mandated the rules, amended the rules to create a new mandate of CSR committees for all companies that have unspent CSR balances? So it's extremely unclear. So they keep amending the rules. And if I may also ask, does this not imply a sort of reactive approach to these policies? You see some problem, you amend the rules. Couldn't we have a coherent long-term vision for CSR? कहते बैठ क्यों जाते हो? डायरेक्शन सदस्यों से क्यों चलते हैं मंत्रीगण? मुझे समझ नहीं आता।
ये फ्रेम आप तो स्पीकर के डायरेक्शन से चला करो. The framework of CSR rules has been defined in Section 135 of the Act, Section 8 of the Act, Schedule 8 of the Act, and the rules thereunder. I think it is pretty clear. There are two Schedule 8, Schedule 7 of the Act. It is very clear as to where funds are to be devolved into any fund after a specific procedure. So if it is an ongoing project, then if it is not completed within the first year, it has to go to another account called the CSR account of that particular company. And then the company gets 3 years to spend that fund on that ongoing project. Once the project is completed and some funds are still left over, then they will go to one of the 4 funds that have been designated by the Government of India. On the other hand, the other route is if a CSR project is completed within the next year, then if all the money has been spent, then no problem. But if some money is left over, then that money, sir, will have to be again go to any fund which is mentioned in Schedule 7 of the Act. They are pretty clear, sir, the rules themselves. Question number 146, Dr. T. Sumati. Thank you, Speaker, sir. Question number 146. Honorable Member. Thank you, Madam Finance Minister, for giving an elaborate answer in the answer sheet. But, Honorable Speaker, sir, I would like to ask through you, Madam Minister, regarding crypto mining. Madam Minister has also made a statement that she will be chairing meetings under G20 presidency to explore crypto regulations. So, crypto mining is the booming thing now, the in thing in India, and a lot of Indians are taking keen interest in that, with the ecosystem favorable for them also. And since China is tracking down crypto miners, India can be an alternate destination if regulatory certainty and infrastructure are provided. I would like to ask Madam Minister through you, sir, how does the government plan to regulate crypto mining in India to cater to environmental and energy consumption concerns? Thank you. Sir, as I explained in the answer given, at the moment, they are largely unregulated in India. Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction. We recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20, so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting, and therefore all this is being looked at comprehensively, because technologies don't brook any broader borders. They can get activated in one area where you control, where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. So supplementary one more. The central bank digital currencies, CBDCs, introduce the concept of programmable money. Sir, the concept of programmable money brought forth by this could potentially impinge on individual autonomy, sir, shifting agency from individuals to an all-controlling state. So I'd like to ask the Finance Minister through you, sir, how does the Union government plan to safeguard an individual's autonomy from excessive control that could be leveraged by the state? The honourable member said, currency is something the
digital currency is something which the central banks issue. As you are aware, sir, and the August House is aware, India's Reserve Bank has come up with a pilot in terms of retail and wholesale use of digital currency, for which there are several sandboxes created so that user cases can be tested. And it is only during this process and immediately after that can there be any kind of understanding on how the retail or the wholesale use of digital currencies will have any spillovers for which any action has to be planned. So that has been just introduced since last December. We'll wait for the outcomes from there. निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आरबीआई ने इस क्रिप्टो को इलीगल टेंडर माना है और आरबीआई के गवर्नर का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर यह क्रिप्टो है। G20 में वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं और जो आपने कहा अपने उत्तर में कि ये मैक्सिमम डार्कनेट पर। मेरा स्पेसिफिक 2 प्रश्न है। एक प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया, उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इलीगल टेंडर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक डाउन किया, क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? सर, इसमें एक ऑनरेबल मेंबर ने 2-3 विषय इसमें जोड़ा है जो अलग अलग नजरिया से हम देखना है और जवाब भी देना है, ऑल्दो द इश्यू इज समवेयर कनेक्टेड। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। हमने जब टैक्स लगाया, ट्रांसैक्शन के ऊपर लगाया, जो क्रिप्टो एसेट्स क्रिएट करते हैं उसको सेल करते हैं, कोई और इसको खरीदते हैं, उस ट्रांसैक्शन के ऊपर हमने टैक्स किया, वो भी टीडीएस है। इसलिए किया, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कौन ये एसेट क्रिएट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म में इसका ट्रांसैक्शन हो रही है और किसने इसको खरीदना चाहते हैं। इससे ये टीडीएस के द्वारा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा का रूट कहां से कहां जा रहा है, जिससे टेररिज्म का फंडिंग ना हो और ड्रग का पैसा इससे ना निकला हो, ऐसे। सो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें, नया टैक्स नहीं लगाया। उन व्यक्ति उनको अगर उनके टैक्स रिटर्न्स में इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वो विषय एक है टीडीएस के ऊपर। दूसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट एक मामला आपने उठाया, टैक्स जो हमने लगाया इसके ऊपर। तीसरा, सर, ये सब जो बाहर चल रही है वो करेंसी नहीं है, ये एसेट क्रिएशन और ट्रांसफर। जो रिजर्व बैंक ने इश्यू कर रहे हैं वो है सॉवरेन बैक्ड करेंसी, और उसमें होलसेल और रिटेल, जैसे मैं पिछले सवाल के लिए जवाब दिया, वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है। उसमें कुछ पायलट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देख करके कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में G20 में भी ये चर्चा हो रही है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा। इन बीच में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम आएगा, उसको कहीं हम बैन ना करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूं, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 147
श्री रतनलाल कटारिया। हाँ बोलिए जी। हाँ कोई बात नहीं, वहां से बोल दीजिए आप। 147। यस। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया।